नमस्कार, आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस खास उपक्रम टॉकथॉन में स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए आप सरकार के चुनिंदा नुमाइंदों से सीधे सवाल कर सकते हैं ट्विटर के द्वारा। आज के सवाल आप काले धन पर जो नया कानून सरकार लेकर आई है उस पर कर सकते हैं और उस पर जवाब देंगे राजस्व सचिव श्री शक्तिकांत दास और प्रत्यक्ष कर बोर्ड की चेयरपर्सन श्रीमती अनीता कपूर। आप हमें सवाल भेज सकते हैं #AskGovernment on Black Money Law पर। मेरा साथ अंग्रेजी में देने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल पद्मनाभन। Thank you, Deepshika. As Deepshika mentioned, we will be going through the details of the new black money law, and we have with us two eminent experts. So to begin with, if I can request the Revenue Secretary to make an opening address for about 5 minutes. So the black money law was brought in by the government through this year's budget. In his budget speech, one of the important aspects of the finance minister's budget speech this year was that the government has a huge commitment to fight the problem of black money, and in that direction number of steps were enumerated in the budget speech. And one major announcement was that a new black money law to deal with the problem of unaccounted assets and unaccounted wealth held by Indian taxpayers outside the country, or what is called as black money stashed abroad. One of the major commitments was to bring a new law to deal with that problem. So accordingly, this new law has been brought in. Now, having said that, I would like to touch upon some of the general aspects of the problem of black money. You see, there are two aspects to the problem of black money in India. One is the domestic component of black money, the other one is the foreign component of the black money. Now, there is huge amount of black money which is prevalent within the country, and there are also reports of black money being held by Indian taxpayers outside the country, which is funded out of unaccounted wealth and unaccounted income. So far as domestic black money is concerned, number of initiatives have been taken, and you would be seeing almost every now and then in the media reports are appearing about what kind of steps the tax departments are taking, both in the direct tax side as well as in the indirect tax side, whether it is the income tax or the Director General of Department of Revenue Intelligence in the customs side. So far as foreign taxation is concerned, number of initiatives have been taken. The first and foremost one is the new law on black money, which has been enacted and which has now been notified, that takes effect from 1st July, where a compliance window has been made open. We will go into the details of the new black money law as we go about in discussion and as we take questions from the participating audience. But another aspect in which we have taken major initiative in the last several months to deal with the problem of black money held abroad is in the realm of exchange of information. The government, that is India, has now signed the FATCA agreement with the United States, under which the tax related information will be exchanged between the two countries, between USA and India, commencing 30th of September. India has also joined the multilateral agreement for exchange of information, automatic exchange of information. And the information flow under this automatic exchange of information arrangement will start in 2017. But even without waiting for 2017, even now on a bilateral basis and on our request, especially where our investigations show presence of black money or we have reasonable suspicion of somebody holding black money outside, on a bilateral basis on request, we have started getting lot of information from the foreign countries, including the tax jurisdictions which are supposed to be what is called as tax havens. The government made a major breakthrough with regard to Switzerland in getting the tax related information. Earlier there were certain cases which were under investigation where we were not getting the required information from Switzerland. But last October, when we discussed with the Swiss authorities, they agreed to provide us information in respect of cases which have been independently investigated by our tax authorities. So today when we are discussing about the new law, in that context, I would like to say that there is a two-pronged approach to deal with this black money stashed abroad. One is through the provision of the new law, the new act which has been now notified.
The other aspect of our initiative is with regard to exchange of information, which is really proving to be very useful to deepen the kind of investigations our officials and our investigating wings are doing. If you can. I would like to start first telling you something about the scope of the new act that we have. It's a stringent act because the current provisions of the Income Tax Act were not strong enough to deter people from earning income, not disclosing it, and accumulating it in the form of assets abroad. So this law is a small act, but it clearly provides what is the income stashed abroad, which will come within the purview of this act. The assets which are accumulated abroad, they will come within the purview of this act. It creates a deeming that for the past assets which have been created before the new act came into force, income which has been earned before the new act came into force, that will be assessed in the year in which the tax authorities come to know about the existence of such an asset. So the issues that whether the asset is accumulated or created 20 years prior to the enforcement of the act, whether those assets will also come within the purview, is very clearly handled in this act. So this act enables the tax authorities to bring to tax income which has been stashed abroad, income which is in the form of assets created abroad, as also the income which may arise after the enactment of this new act, and somebody still takes the risk of not declaring that income to the tax authorities. So when this act has come into force, it also has a 3-month compliance window that enables the taxpayers who have created assets, and let me make it clear, it's not, compliance window does not relate to income, it relates to assets. So if you have assets abroad, you can disclose those assets in this 3-month period, which will expire on 30th of September. You have to pay tax of 30% and an equivalent amount as penalty. That means you pay 60% of the fair market value of the asset, and you can take advantage of this compliance window. If you fail to take advantage of the compliance window, the repercussions in terms of the provisions of the act are very, very stringent. Instead of 30% tax and 30% penalty, you will be asked to pay the 30% tax plus 3 times of the tax as penalty. That means if you have an asset or an income of say 100 rupees, the tax is 30 and 90 is the penalty on that. So 120 you pay as penalty, plus you are liable for prosecution. You can be sent to jail for a period of 3 years to 10 years. You also become subject to the provisions of Prevention of Money Laundering Act, because this offence of not declaring your foreign income and assets is a predicate offence. So you will go under PMLA, and all the provisions of the PMLA will become applicable, and all other immunities which are available in the compliance window, in terms of, like, you have an immunity from wealth tax, you have an immunity from customs, those immunities also go away. So whatever is found after the end of the compliance window will be subjected to the rigorous provisions of this act. And the flow of information, as Revenue Secretary said, we have put in place various mechanisms that flow of information of your foreign assets income is going to certainly improve. We have FATCA already, which has kicked in from 30th of September. By 30th of September, we will start getting some information from US. We are already party to an automatic exchange of information regime, which will give us information from 2017 from lot of countries. And we already are getting information from various countries, either on spontaneous basis or on request basis, where information is coming to us, and that information, we have systems in place to use that information in a very organized and in a very effective manner. Thank you.
जैसा कि आपने कहा, एक नया कानून सरकार लेकर आई है उन लोगों के लिए जिनका अगर कोई बैंक अकाउंट या जिन्होंने काला धन देश के बाहर रखा हुआ है, उनके लिए ये एक आखिरी मौका है उसे डिक्लेयर करके उस पर टैक्स पे करने का। और जैसा कि राजस्व सचिव ने बताया कि सरकार के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अब दूसरे देशों से भी बहुत सूचना मिल रही है कि वहाँ पे जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं उनका अगर धन वहाँ पर है तो उसके बारे में सारी सूचना, और 2017 से तमाम देशों से ये सूचना हमें मिलने लगेगी। और सवाल ट्विटर पर आने शुरू हो गए हैं और पहला सवाल हमारे पास आ रहा है, चंद्रशेखर बरा हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार जो है स्विट्ज़रलैंड और बाकी देशों में जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके बारे में इतना समय क्यों लगा रही है, मतलब उसमें एक्शन लेने में इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक प्रोसेस होता है, और जैसे कि मैंने बताया आपको, स्विट्ज़रलैंड के बारे में पहले कुछ प्रॉब्लम्स थे। स्विट्ज़रलैंड के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे मतलब पब्लिक में बहुत इंक्विजिटिव है और जानना चाहते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन पहले भारत सरकार को मिली थी, दैट वाज सपोज टू बी अ स्टोलन डाटा। उनके कहने के मुताबिक वो स्टोलन डाटा, क्योंकि उनका एक एम्प्लॉई उसको इलीगल तरीके से वो निकाल के फिर फ्रेंच अथॉरिटीज़ को उन्होंने दे दिया और फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने भारत सरकार को उसको दे दिया। तो स्विस लॉ में उसको स्टोलन डाटा कहते हैं और उनके लॉ के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन वो किसी, उसके बारे में डिटेल्स किसी को नहीं देंगे। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में हमने जो नेगोशिएशन किया स्विस अथॉरिटीज़ के साथ, वो एक बड़ा सा ब्रेक थ्रू था। उसके बाद उन्होंने कन्विंस हो गए कि उसमें कई सारे केसेस है जिसमें हमने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हम लोग ने किया था, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किया था। जहाँ पे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो गए हैं और उसमें वो इन्फॉर्मेशन फ्लो शुरू हो गया है। और ये जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट है, उसमें स्विट्ज़रलैंड ऑल्सो इज़ कमिटेड टू दैट मल्टीलैटरल अरेंजमेंट। सो 2017 के बाद वो इन्फॉर्मेशन फ्लो हमको मिल जाएगी। अभी का सिचुएशन ये है कि हमको इन्वेस्टिगेट करके कुछ डिटेल्स देना पड़ता है, क्योंकि उनका लीगल सिस्टम जो है उसको सेटिस्फाई करनी है। तो बट अदर देन आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, हम यहाँ पे काफ़ी सारे नॉन इंट्रूसिव मैनर में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और जो जो एक फॉरेन बैंक का जो डेटा आया था हमारे भारत सरकार के पास, उसमें जहाँ जहाँ प्रोसिक्यूशन होने वाले थे सारे केसेस में 122 से ज़्यादा केसेस में प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गया है और अभी कार्रवाई जारी है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर कार्यवाही नहीं कर रही है और बहुत ज़ोर शोर से जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं दूसरे देशों पर, उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बखूबी उस पर कार्यवाही कर रहा है। I just, before we move to the next question, I had just quick follow-up to what Deepshika asked you. You said this exchange of information kicks in 2017. So will it be with retrospective or is it prospective from 17 on the information sharing that will take place? You see, there is a roadmap for information sharing, and according to that roadmap, initially we will get some quantum of retrospective information and by and large the prospective information. But over a period of time, we will get the past period information also. So it is both ways. Thank you. The next question is, I think, addressed to you, ma'am. It says, from taxsutra.com is Advocate Sandeep Bagmar. He says, does the black money law cover undisclosed foreign income and assets acquired prior to PY 1516? Of course, it does cover any year, and the Act has come into force on 1st of July, and we get information anytime, not today, not tomorrow, maybe 10 years down the line of your assets of 13, 14, 14, 15, 15, 16. We will tax it at the time when we get the information. So, Act covers all past sins. If I can just follow up, your message to the dishonest taxpayer is very stern and very obvious. Both of you have made it very clear. But the honest taxpayer has also a concern and a fear that of fear of misuse. So how does, I mean, if both of you can address it, your authorities seek to protect
the honest taxpayer from harassment or some kind of misuse of the law? See, if I can take that question. Now, the first part of the question which was asked and which she has already replied, just want to supplement by saying that supposing somebody has acquired an asset, let us say 10 years ago, under the law, under the new black money law, when it comes to the either he declares, or if he doesn't declare after this compliance window is closed, when it comes to the notice of the tax authorities, it will be treated, the value of that asset will be treated as if it is an income which has accrued to him in the previous year. That means in the year preceding the assessment year. So, irrespective of when sources. Now, coming to the other part of the question which you asked about the concern of the common persons and common men, yes, I think it's a very valid question. Let me say two things. Number one, while drafting the law, while preparing the rules and subsequently the explanatory notes which have been issued, the frequently asked questions, it's very unusual, and in fact I think it's done very rarely and it has been done this time. The CBDT has issued replies to 32 questions under the caption FAQ, frequently asked questions. The effort has been to make the law, the rules and the provisions as transparent and objective as possible, giving no room at all to the individual tax officers for use of any discretion. That is one aspect. Secondly, with regard to the compliance period, which is now open for 3 months, only one officer of the rank of commissioner has been designated in Delhi, and if there is requirement, one more officer will be designated perhaps in Mumbai. He works under the direct supervision of the Central Board of Direct Taxes, and the choice of the officers who are dealing with this case, not only the commissioner but his support staff, that has been done very carefully to ensure that the law is applied and implemented in a very free, in a very fair and reasonable manner without any harassment. And in the law also we have made provision that the Indian the youngsters, the professionals, our IT professionals and others who go out and go and work abroad and come back after some time, or students who go abroad for studies or for short term research and who come back, we have provided adequate provisions in the Act and the rules in a manner that they are not hit by the provisions of the Act in an unreasonable manner. आपने कहा कि लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, हैरेस नहीं किया जाएगा। आम जनता में ये एक बहुत बड़ा डर होता है कि हम एक टैक्स ऑफिशियल के पास जा रहे हैं या टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं और हम कुछ डिस्क्लोज़ करेंगे तो उसे बहुत तंग किया जाएगा। लेकिन आप ये एश्योरेंस दे रहे हैं लोगों को कि इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी को किसी किस्म की परेशानी ना हो इस कानून में अगर वो आगे आते हैं और डिक्लेयर करते हैं अपना धन। इस पर एक सवाल ये है कि किसी के पिता या किसी के रिश्तेदार जो हैं उनका कोई एसेट विदेश में था और जो आप उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है और उसे नहीं पता है कि वो सोर्स उस एसेट का क्या था, तो इस स्थिति में उसे क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आकर इस नए कानून में इस एसेट को डिक्लेयर करना पड़ेगा? देखिए, अगर वो लीगल एयर हैं वो एसेट कंप्लायंस विंडो में डिक्लेयर कर सकते हैं। कंप्लायंस विंडो में सोर्स नहीं पूछा जा रहा, आप अपना एसेट डिक्लेयर करिए। अगर बाद में कहीं पता लगा कि वो प्रोसीड ऑफ करप्शन है तो या कुछ ऐसा स्मगलिंग एक्टिविटी का है तो वो डिक्लेरेशन इनवैलिड हो जाती है। तो इतना तो लीगल हेयर को नॉर्मली मालूम रहता है कि ये जो एसेट है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से है या एक्टिविटी लीगल है, पर it has resulted into creation of non-tax paid money which is black money. तो लीगल एयर डिक्लेरेशन दे सकते हैं कंप्लायंस विंडो में। आपने दास साहब कहा कि
जो यूएस में या विदेशों में हमारे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने खास तौर पे प्रावधान किया है इस नए कानून में। हमारे पास सवाल आया है, इंडी बदवार हैं ये, और ये पूछना चाह रहे हैं कि यूएस में जैसे लोग जो काम करते हैं वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी में अपना उनका कटता है, तो उनकी जो पेंशन्स हैं वो यहाँ पर टैक्सेबल होंगी या नहीं, उस पर टैक्स लगेगा, उस पर कर देना होगा उनको, या इस विंडो में डिक्लेयर करना पड़ेगा काले धन कानून के तहत? कि अगर कोई प्रोफेशनल आज के तारीख में बाहर काम कर रहे हैं और एज ऑन टुडे अगर वो इंडियन रेसिडेंट टैक्स पेयर नहीं है, ये कानून उनके ऊपर लागू नहीं होगा। उनको जो इनकम आ रही है, अगर इंडिया से कोई इनकम जा रहा है तो बात अलग है, उसमें तो कंपनी जो है उसमें टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करके वो डिपार्टमेंट को दे देंगे। लेकिन आज के तारीख में अगर वो रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंट टैक्स पेयर, भारत मतलब ही इज़ नॉट ए रेसिडेंट टैक्स पेयर इन इंडिया, और वो यूएसए में रह रहे हैं एंड ही इज़ पेइंग टैक्स देयर, ये कानून जो है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर बाद में वो भारत आते हैं, देन अगर इस पीरियड जब वो यूएसए में थे अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया है या कहीं पे कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर किया है, उसके बारे में ही इज़ आउट ऑफ दिस न्यू ब्लैक मनी लॉ। बट अगर इंडिया आने के बाद उनको दो चीज़ें करना पड़ेगा। एक, उनका टैक्स रिटर्न में उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, सिर्फ डिक्लेरेशन, वो फॉर्म FA है, वो फॉर्म FA में उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा जब वो रेसिडेंट टैक्स पेयर इंडिया में फिर दोबारा बन जाते हैं, तो कि इनका ये बैंक अकाउंट फॉरेन कंट्रीज़ में है, अमेरिका में है, या तो फिर इनका ये प्रॉपर्टी जो है यूएसए में है, उनको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। और इंडिया आने के बाद अगर उनका कोई वहाँ से इंटरेस्ट इनकम या किसी तरह का डिविडेंड इनकम या कहीं पे इन्वेस्ट किया है उसमें कोई इनकम आ रहा है, तो उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसका स्थिति यही है। ये जो न्यू लॉ है, देयरफॉर द इंडियन स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए देयर इज़ नथिंग टू वरी। FAQ में ऑलरेडी ये पोजीशन क्लैरिफाई किया गया है, और आने वाले कुछ 1-2 हफ्ते में भी हम लोग मतलब CBDT विल इशू कुछ क्लैरिफिकेशंस इशू करेंगे, कुछ FAQs इशू करेंगे। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो कि स्टिल क्लियर नहीं है, उसको भी डील करके रिप्लाई दे देंगे। यूएस में कई तरह के योजनाएं हैं, जैसे 401k है जो बहुत पॉपुलर है। दूसरे देशों में भी लोग जब जाते हैं तो ऐसी कुछ योजनाओं में अपना पैसा लगाते हैं और वो लगा करके वो फिर वापस आ जाते हैं, और वो योजनाएं, उसका पैसा बाद में उन्हें मिलेगा कुछ सालों बाद। तो इस कानून के तहत क्या उन्हें सरकार को ये बताना पड़ेगा कि हमने इस योजना में पैसा लगाया है और हमें ये मिल सकता है इसमें? जैसे रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बताया, आप बाहर काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए नॉन रेजिडेंट हैं, हमारे टैक्स कोड के हिसाब से आपको हमें कुछ नहीं बताना। आपका रिटर्न रिक्वायरमेंट जो है फाइल करने का, वो एज नॉन रेजिडेंट है इंडिया में। अगर आपका कुछ इंडिया में इनकम है, आपने यहाँ पे कोई FD खोल रखा है, कोई आपका किसी तरह का कोई और सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं आप यहाँ पे, उतना इनकम हमें दिखाइए। आपके ऊपर वो शेड्यूल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स अप्लाई नहीं करता। अब आप नेक्स्ट सिचुएशन में आइए कि अब आप वापस इंडिया आ गए हैं, आप इंडिया के रेजिडेंट हो गए हैं, आप पे FA अप्लाई कर जाएगा शेड्यूल। जो आपकी 401 की इन्वेस्टमेंट है आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी हमारे लिए। और अगर उसका कोई इनकम जनरेशन होता है, किस पॉइंट पे वो इनकम जनरेशन हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्कीम, उसके हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी डिटर्मिन होएगी। इट विल वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री के किस स्टेज पे वो इनकम दिखाते हैं, क्योंकि जब आप रेजिडेंट बन जाते हैं तो इंडियन टैक्स सिस्टम ऐसा है कि आपकी ग्लोबल इनकम टैक्स होती। कहीं भी इनकम जनरेट कर रहे हैं आप रेजिडेंट इंडिया के हैं, तो आपको वो इनकम दिखाना पड़ेगा। Thank you. In your opening address, you mentioned about how the black money has two forms. One is domestic, and one is what is abroad. And this black money law, in many ways, addresses what is held abroad. But you also use the word huge. So, if I could just ask you, is there an estimate
on this huge? Can you quantify what is the amount of black money? No, when I said huge, I did not mean the quantum, because nobody has an estimate of what is the quantum of black money. I use the word huge in the context of the nature of the problem. It is a huge problem with which we have to deal with, because the problem is very complex, both with regard to how it arises, where it is stashed, how it is diverted and invested in various places, how it is sought to be camouflaged by doing multi-layering transactions. So, to penetrate through the web of that multi-layering and reaching the core of the problem, it's a huge challenge. It was said in that sense, but with regard to the quantum or the estimation of how much black money is there, there is no such scientific analysis, and it's very difficult to say. If we knew how much money was held abroad, I mean, my guess in this regard would be as good as anybody else or as bad as anybody else. And if we knew how much money is kept where, we would definitely, government would take action to bring it back. But the effort is in that direction, to locate where all this money is there and to bring it back through the provision of this new law. I also want to add something here. It is not only income earned abroad which is under the purview of this new Black Money Act. It's the income may have been earned in India, but if it is shifted out of India through whatever channels and it goes and parks itself outside India, a bank account itself becomes an asset then, and this act will apply on that. So, this act has a reach over the black money generated in India. That means income earned in India, but on which no tax is paid, and then that income is shifted to some other jurisdiction where it lies in the form of a bank account or some real estate or some other assets. Plus, an Indian sitting here, if he is our resident, but he is doing some activity for which he is getting paid abroad. So, the income is accruing abroad, which should have been offered for taxation in India, because we tax his global income, and that has not been offered for taxation. So, that component is also covered under this act. So, this act is actually covering the domestic black money which goes and sits in some other jurisdiction, as also the income earned abroad which should have been offered for taxation in India and which is not offered for taxation in India. In fact, just to, sorry to intervene again, now again to talk of another dimension of the complexity of the problem. Now, if somebody has an asset which is undeclared and it is held outside, either it was funded out of some income he has generated outside the country which he has not disclosed, or it is the kind of it has been funded out of his income which he has generated in India but which is undisclosed. Now, if you want to attach that property, or if you want to bring back the value of that property into India, you have to follow the due process of various international legal provisions applicable in other countries, because in the other countries their law also will apply. So, sometimes it can be very difficult to penetrate that and really get back that value of asset into India. This time what the government has done is, therefore, number one, willful evasion of tax has been made a predicate offence under Prevention of Money Laundering Act, and secondly, under Prevention of Money Laundering Act, an amendment has been done that if an asset which is financed out of laundered money, if an illegal asset is held abroad, then the equivalent value of that asset owned by that particular person in India can be attached and eventually confiscated. So, that is another aspect of the legal provision which has been made to deal with the one aspect of the complexity of the problem. In fact, the next question is related to domestic black money. It's Vamsi Krishna who's asked, how is the government going to tackle black money stacked in India? So, you have both touched on it briefly, but if you could expand a little more. You see, various sectors are prone to generation of black money. Number of steps have been taken over the last 1 year. The finance minister has announced in the budget that all cash transactions, all transactions in fact, exceeding rupees 1 lakh will require the PAN card to be mentioned. It is said that real estate sector is prone to
lot of black money generation. The government has introduced in the parliament the Benami transactions, the Benami property transactions amendment bill. The government has also brought in a legal provision that for acquisition of any asset, cash advance exceeding 20,000 rupees, if paid, will be treated as illegal. Then we are also simultaneously adopting lot of non-intrusive methods to locate individuals and entities which are prone to domestic money generation. Non-intrusive methods means doing a 360-degree profiling of individuals, 360-degree profiling of sectors, and trying to find out where the generation of black money takes place. One area where I must say the income tax department has done a significant amount of work and where very good progress is noticed is with regard to the operation of entry operators, whereby entry operators provide a mechanism of converting black money into white through through a layering kind of transactions, and it's a complicated method they follow. So the income tax department took it upon itself to adopt a project approach. So by adopting that project approach, the methodology of that entire operation has been identified. The individuals and entities indulging in that kind of entry operation activities, they have been also identified, and action has been taken. So it's a multi-pronged approach which is being taken. I would leave it to my colleague to supplement. Revenue Secretary mentioned some of the legislative measures. So one side, you are strengthening your legal powers so that the black money generations get addressed. Second is, we are improving our information collection mechanisms. We have a large activity covered under the tax withholding provisions. TDS is made. We are ensuring that the deductors discharge the responsibilities that they have, and they report to us all those transactions. We have third party information flowing into us, and we are trying to see that most of this information should be linked to PAN. We are also trying to capture on optional basis as of now the Aadhaar in the returns. So with the various sources of information coming to the department, we have a project Insight which will kind of mine that information in a much more effective manner. We currently have some capacity, some skills in mining the information, but we are getting information in silos, which sometimes mining becomes a very arduous task for us. So we are trying to bring all information on one platform, link it to PAN, which is an identification number for us, and then target people who really have taken advantage of various loopholes in not paying the due taxes. So we have two targets: one, the people who don't file returns with us and who don't pay taxes. But the current studies show that segment which is missing from our taxpayer base is primarily of a small taxpayer, people who earn income of 4 lakh or below. The larger problem is of the taxpayers who are with us, who file returns, but who understate their income in a big way. So we are targeting both with reference to the information that we currently have and the improved information mining capability that we will have in place shortly. तो आप कहना चाह रहे हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसके पास हर तरह की सूचना आ रही है, निवेश की सूचना आ रही है जो एक आम आदमी करता है, या कहीं वो खर्चा कर रहा है, किसी बड़ी या गाड़ी खरीद रहा है या कुछ बहुत महंगी चीज़ खरीद रहा है, वो सारी सूचनाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अब उपलब्ध हैं और वो इसका इस्तेमाल करेगा आगे जा कर के। इस्तेमाल तो अभी भी कर रहे हैं जी। बहुत से लोगों को हमने नोटिसेस दिए हैं कि आपने रिटर्न नहीं फाइल किया और हमारे हिसाब से आपने इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया है, इस तरह का ट्रांजैक्शन किया है, तो उसके हिसाब से आपका इतना इनकम होना चाहिए। एक हमने प्रोजेक्ट चला रखा है नॉन फाइलर्स के लिए, जो हम मॉनिटरिंग करके ऐसे और एक तरह की प्रोफाइलिंग कर लेते हैं कि इस टैक्स पेयर का इतना सा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतना खर्चा आ रहा है,
इसके हिसाब से इसका इतना रिटर्न ऑफ इनकम होना चाहिए था और रिटर्न नहीं फाइल्ड है, तो उन लोग को नोटिस दिया जा रहा है और उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 30 लाख टैक्स पेयर हमने आइडेंटिफाई किया था जो हमारे टैक्स नेट में नहीं था। तो बहुत से लोगों ने कंप्लाई किया, उसके बाद अपना रिटर्न फाइल किया, टैक्सेस पे किया। तो ये जो प्रोसेस चल दिया है वो टाइम आने में इम्प्रूव ही होने वाला है, स्ट्रेंथन ही होने वाला है, इसमें किसी तरह की लैक्सिटी नहीं आने वाली। तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास एक सवाल आया है, बाला सुब्रमण्यम एस हैं, और आजकल जो खास बातचीत की जा रही है, जो नया कानून आया है काले धन पर, कि इसके डर के मारे जो है लोग देश छोड़ कर के भाग रहे हैं, और ये सवाल यही कर रहे हैं कि किसी के पास अगर करोड़ों हैं मॉरिशस में, तो उसका क्या फ़ायदा है कि वो वापस उसको यहाँ ले कर के आए और यहाँ डिक्लेयर करे टैक्स डिपार्टमेंट को। उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो देश छोड़कर चला जाए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है कि लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। ये ऐसे ही मतलब कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मेरे जानकारी में इतना कोई नंबर नहीं है कि जो लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपने मतलब ब्लैक मनी ऑलरेडी यू हैव जनरेटेड आउटसाइड, आप कहीं पे चले जाइए, द लॉ विल रीच यू, द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ जो है इट विल रीच यू। आप कहीं पे चले जाइए, मॉरिशस चले जाइए, दुबई चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। आप चाहे देश छोड़कर किसी और भी देश में चले जाइए, हमारे टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ बहुत लंबे हैं, वो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन ये कहना गलत होगा कि लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और लॉ जो है, देखिए हमारे देश में सिर्फ नहीं, अब इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे, सारे देशों में अभी ये जो ब्लैक मनी है, अनअकाउंटेड मनी है, इसको फाइट करने के लिए देयर इज़ ए रिजॉल्व इंटरनेशनली इन ऑल कंट्रीज। एंड ये जो G20 फोरम है, उसमें जो 20 कंट्रीज मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में जब पिछले साल वो उन्होंने उनका जो समिट हुआ था जिसमें हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैड पार्टिसिपेटेड, हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसमें शामिल हुए थे इंडिया के तरफ से। द प्राइम मिनिस्टर हैड आल्सो मेड ए वेरी क्लियर स्टेटमेंट दैट द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी इज़ अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो ये सारे देशों में अभी इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये सिर्फ ये नहीं कि हम हिंदुस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी कंट्री में नहीं हो रहा है। तो ये इंटरनेशनली इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए कॉमन प्रॉब्लम, एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट्स आर कमिंग टुगेदर टू फाइट दिस प्रॉब्लम। So actually we have a new question which is related to what both of you referred to in your opening address. This is Sudhakar. His question is, so the people with black money can pay tax and make it white, or do they pay the penalty and move on, or is there any imprisonment associated with it? अगर आप कंप्लायंस विंडो में आ रहे हैं तो कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है। आप 30% टैक्स दीजिए, 30% पेनल्टी दीजिए, तो कोई प्रोसिक्यूशन नहीं। पर अगर आप कंप्लायंस विंडो का यूज़ नहीं किए और बाद में हमको पता लग गया आपके एसेट्स का, तो जैसे मैंने कहा टैक्स तो देंगे, उसके बाद 3 गुना टैक्स से पेनल्टी देंगे और 10 साल तक जेल में जा सकते हैं। इसी इसका ये मैं आई जस्ट वांट टू सप्लीमेंट बाय सेइंग दैट द लॉ इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट। Before the law takes effect, the government thought it right to give a last opportunity, a one-time opportunity to people who want to come clean and declare that they have this asset for whatever reason. Somebody has acquired an asset outside out of tax evaded money, he wants to come clean. So let him have an opportunity to declare it. If he doesn't use this 3 months compliance window, 3 months for declaring and another 3 months for paying. Payment actually he can make even in the 3 months, first 3 months also, but 3 months to declare. If somebody doesn't use this opportunity of the compliance window which has been opened, जैसे कि मैंने beginning में कहा, after 2017 we will get all information relating to tax, all tax related information we will get, and then the stringent provision of the law will apply, and the stringent provision includes not only penalty at 30%, but also not only tax at 30%, but penalty at 3 times the tax, which means
totally tax and penalty included, it comes to 120% of the value of the asset, plus he will be prosecuted, which carries a punishment of rigorous imprisonment of up to 10 years. So therefore, given the fact that information flow will start to India in 2017, it will be in the interest of any taxpayer or any individual for that matter, it will be in their interest to come clean now, use the opportunity, this one-time opportunity, pay the tax, pay the penalty, and have good night's sleep thereafter. आप हम जिक्र करते हैं जब हम इस काले धन कानून की बात कर रहे हैं कि आपके जो विदेश में एसेट्स हैं उन्हें आपको डिक्लेयर करना है, तो जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो उनमें क्या क्या शामिल है? सिर्फ बैंक अकाउंट या और किस किस्म के प्रोडक्ट्स आप उसमें शामिल होते हैं? हर तरह का एसेट, कुछ भी एसेट है आपके पास, हाउस प्रॉपर्टी है, शेयर्स हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी तरह का, हर एसेट, ज्वेलरी है, लॉकर में कुछ रखा है आपने, स्टोन, डायमंड स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स हैं, कुछ भी है, कोई भी एसेट है आपका, कैश है, सब कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं। 30 सितंबर तक आप ये सब सरकार को बता सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं। हमारा अगला सवाल है और ये एक आईटी प्रोफेशनल के तहत पूछ रहे हैं, नलिन का सवाल है ये, और ये जानना चाहते हैं कि जो आईटी प्रोफेशनल नॉन रेजिडेंट थे, जो इस देश के वासी नहीं थे 2014-15 में, उनके केस में क्या होगा? क्या उन्हें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? डिक्लेरेशन हमने अभी अगर आज के तारीख में सपोजिंग वो इंडियन टैक्स पेयर बन गए हैं, रेजिडेंट टैक्स पेयर जी, आज के तारीख में अगर वो रेजिडेंट टैक्स पेयर बन गए हैं तो उनको वो टैक्स रिटर्न में फाइल करना पड़ेगा। ही हैज़ टू ओनली इन्फॉर्म, फाइल द रिटर्न। और जब बाहर थे वहाँ का इनकम से अगर कोई उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया है, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक्स, शेयर्स, कोई बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट उन्होंने मनी पैसा रखा है, तो वो फॉर्म में उनको इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना चाहिए। तो 2015-16 में अगर वो इस देश के वासी हैं, चाहे वो इस देश के वासी नहीं थे 2014-15 में, आज की तारीख में उन्हें डिक्लेरेशन एक देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर वो 15-16 में अगर वापस आ गए हैं तो उनका जो असेसमेंट है ईयर है वो है 16-17, तो वो अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न में भी फाइल कर सकते हैं, इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न में भी वो डिक्लेयर कर सकते हैं। See, the general fear of honest taxpayers seems to be continuing to pop up. Understandable, because your message has been very, very stern and no nonsense about to dishonest taxpayers. So our next person is question, her name is Ranjana Gupta. Her question is, if the source of assets abroad are fully explainable and legitimate, then do these assets come under the purview of your new black money act? She has nothing to worry in this matter. Absolutely nothing to worry in this matter. We are conscious of such problems which may arise. She has nothing to worry, because if she has already explained it in the other country, she has filed a return in the other country, and in any case, when she was a IT professional or when she was working abroad, at that time she was not a resident taxpayer of India. So she is not covered under the new law. Only when she comes back to India and again becomes a resident taxpayer in our country, she has to declare whatever investment or whatever assets, if she continues to hold even now, she has to simply declare it in her return. And if, as I said earlier, if she is still deriving some income from those assets, that will form part of her income, which she has to declare and pay tax on that. So through you, I want to again assure the professionals, Indian professionals, youngsters, students who are working abroad temporarily, who go and come back to the country, they have nothing to worry. And if still we have addressed all their concerns in the FAQs, if still they have certain issues, they can write to us. In the next set of FAQs, we will issue written clarification addressing all their concerns. अगर आपका
इनकम जो है, अगर आपकी कोई आय देश के बाहर है, उस पर आप टैक्स दे चुके हैं, तो आपको यहाँ, और आप यहाँ पर वासी नहीं थे, तो आपको सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा अपनी उस एसेट के बारे में जो अभी भी विदेश में है। आपको उस पर टैक्स देने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको तंग नहीं किया जाएगा। आप ये कहना चाहें? मैं ये बता दूं, ये जो रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना एसेट डिक्लेयर करना है, ये 2012 में आ गया था और 2012 से लेके आज तक हमने कोई किसी तरह का इस तरह का एप्रीहेंशन या फियर जो है आर्टिकुलेट होते नहीं सुना। ये जब से नया ब्लैक मनी एक्ट आया है तो लोग इस तरह की चर्चा करने लगे हैं और ऑलमोस्ट 25,000 से 30,000 लोगों ने जब रिटर्न्स फाइल किया पिछले साल में, उन्होंने अपना एसेट डिक्लेयर किया जो किसी स्टेज पे उन्होंने क्रिएट किया था बाहर, क्योंकि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको परमिशन देता है अंडर द लिबरलाइज स्कीम कि आप कुछ पैसा बाहर भेज सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर कर सकते हैं। आपने अपना इनकम टैक्स पेड मनी को थ्रू लेजिटिमेट रूट इन टर्म्स ऑफ द परमिशन गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपने बाहर भेजा, एसेट क्रिएट किया। हम उसके बारे में आपको किसी तरह की भी हैरेसमेंट नहीं होने देंगे। एज टैक्स डिपार्टमेंट वी कैन होल्ड आउट दैट एश्योरेंस एज लॉन्ग एज यू हैव फॉलोड द लॉ ऑफ द लैंड। उस ढंग से आपने एसेट क्रिएट किया है तो आपको किसी तरह की भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी शंका है लोगों के मन में, और ख़ास तौर पे इस कानून के आने के बाद और इस कंप्लायंस विंडो को लेकर के, कि क्या आप, अगर वो इस कंप्लायंस विंडो में आगे आते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि उनका कोई एसेट विदेश में था और टैक्स पे करते हैं, तो क्या टैक्स डिपार्टमेंट उनका नाम भरी पब्लिक में उछाल देगा? क्या उनका नाम सीक्रेट रखा जाएगा? ये जो न्यू लॉ है, इट्स वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट एक तो ये है कि इसमें कोई अश्योरेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं दी गई है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ प्रोविजन, वो प्रोविजन में ये कहा गया है कि सेक्शन 138 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट which gives which is basically a confidentiality provision कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर का जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। However, the department in public interest can declare it, but by and large वो इंफॉर्मेशन जो है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ये जो न्यू लॉ है उसमें भी जो डिक्लेयर करेंगे, ये नहीं कि हम वो डिक्लेयर करने के बाद हम एक पब्लिक नोटिस लगा देंगे कि सो एंड सो इन्होंने ये बेनिफिट अवेल किया है और टैक्स पे किया है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 138 एप्लीकेबल है, जिसमें टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है इंडिविजुअल का, वो हम वैसे मतलब कोई बेवजह उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते हैं। वो कानून है, उसको हम बिल्कुल मानकर चलना पड़ेगा। And in fact, to add to that, Supreme Court has also held, जैसे RTI एक्ट में लोग डाल देते हैं एप्लीकेशन की इसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने RTI एक्ट के अंदर भी कह दिया है कि जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आती है, विच इज़ इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, टैक्स पेयर हमको बताता है, तो वो RTI एक्ट में भी डिस्क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट इशू बनाया जा सके। सो 138 काफ़ी अच्छा सेक्शन है जिसके अंदर टैक्स पेयर की जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो फ्री थिंकर जो हैं ट्विटर पे उन्होंने सवाल किया कि जो कंप्लायंस विंडो में आएंगे क्या उनके नाम सरकार डिक्लेयर करेगी? तो ऐसा अभी कोई विचार नहीं है सरकार का कि इन नामों को पब्लिक किया जाएगा। लोग इस पूरी सुरक्षा भावना से आ सकते हैं, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनका नाम पब्लिक में आ जाएगा। See, you're reassuring the people that there will be no name and shame once you come into the compliance window, and this confidentiality is guaranteed under the existing laws of the Income Tax Act. But there's a larger question that is following up, that suppose an individual does comply, so does he or she become subject to greater scrutiny going forward by the income tax authorities? Can you give a reassurance that that won't be the case and it will be
a case by case depending on whether you are compliant with the tax laws or not. A simple. See, we have said, I think it's in the explanatory notes or in the one of the in the explanatory notes which have been issued along with the rules. It has been very clearly stated that under the during the compliance period, if somebody comes and declares, the officer, the commissioner, is not going to conduct any other kind of inquiry. He will not, I repeat, he will not go on a roving inquiry or a fishing expedition to find out whether there is something more about that particular person. That information will be accepted and it will be verified before 30th October whether we have received any information in respect of that person under this tax treaties from another country. If we have already received some information under a tax treaty with another country in respect of that person, then obviously he or she will not be eligible for availing this compliance window facility. And in such cases, what happens is that his case will be treated under the normal income tax law for payment of tax penalty under the normal income tax law. Again, to answer your point, I repeat that there will be no other kind of roving inquiry conducted, excepting that we have to verify whether we have received some tax related information about the kind of undisclosed income which he is now revealing, whether we have already received that information from another country through this exchange of information. Okay, our next question to you on Twitter is from Gopi. His question is, how about Benami holding accounts who have assets in I think you can his, Benami, you know, basically I think he is referring to the fact that you have Benami assets in India. So, they have basically accounts, Benami accounts which have been used to finance assets. So, what about them? You see No, the, see, you please. there are two aspects to this. One is you are holding a Benami account in India. Under the current income tax law, income belongs to the person who's earned it, and you may hold it in the name of X, Y and Z, and if we come to know that you have earned that income will be assessed in your hand. You may hold it in anybody's name. So, that is immaterial. Now, you are holding a Benami asset abroad. Benami asset abroad would be in terms of through a trust or through another mechanism where you put the money and you are the beneficiary. This act creates a fiction for the beneficial owner also. Anybody who is a beneficial owner who has put in the money, he comes within the purview of this act. So, the foreign money as it is through the concept of a beneficial owner has been addressed in the Black Money Act. This is for the foreign assets. For the local assets, one, we already have a system of saying that income has been earned by you, asset may be created in anybody else's name, we will tax it. And like Revenue Secretary earlier mentioned, we have moved an amendment to the Benami Act also. So, once the Benami Act in the new form becomes effective, the property as it is will get confiscated by the government if it is Benami property. So, there are tax consequences and there are also consequences in terms of the Benami Act. See, 2 points I would like to add to her reply. One is the KYC requirement, know your customer requirement. That KYC requirement has been, it has been fine tuned over the years, and all financial institutions, banks and other financial institutions are required to do a due diligence of the identity of the customer, his identity, his address, etc. And we are now creating a common repository of the KYC information relating to individuals. So, that common repository information will be a data bank which will be available to us to find out the identity of persons. Secondly, people may not know about it, but internally from banks, from financial institutions, from mutual funds, from stockbrokers, we get lot of information about the accounts held, what kind of interest is being paid, what kind of investments are being made, or investment in a mutual fund exceeding a particular amount,
property transactions which are being done exceeding a particular monetary value, we internally get lot of information, and this information is then processed, and we are able to identify potential areas of, not potential but areas and individuals who evade tax. She just mentioned about 30 lakh cases. You know, we have this non-filer monitoring system. From this kind of information analysis, we come to know that a particular person, he has invested so much money in the stock market, or he has earned so much interest in a bank account, but our system shows that he or she has not paid the tax. He has not even filed the tax return. So we issue a notice in such cases. So therefore, somebody holding a Benami account, it will be increasingly difficult for them to, you know, evade the tax net. आप कर देने से बच नहीं सकते हैं, चाहे आपने धन, काला धन देश के बाहर रखा हो या देश के अंदर। टॉकेथॉन का ये कार्यक्रम अब यहाँ हमें संपन्न करना पड़ेगा। राजस्व सचिव श्री शक्तिकांत दास और श्रीमती अनीता कपूर, जो प्रत्यक्ष कर बोर्ड की चेयरपर्सन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन सवालों का जवाब दिया, और आप सभी का जिन्होंने हमें सवाल भेजे। नमस्कार।